हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे एंड दिस इज़ क्लास 9th ICSE बुक। तो बेसिकली हम जो फर्स्ट चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू जावा, बट स्टिल अगर हम लोग किसी भी चीज़ के एक बैकग्राउंड को समझ लेते हैं तो इट इज़ बेटर एंड इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड दैट कोड क्या है, कैसे लिखा जाता है, कैसे मशीन्स में उसको फीड किया जाता है एंड ऑल दोज थिंग्स। इससे प्रीवियस वीडियो में भी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू जावा, इम्पॉर्टेंट टर्म्स या फिर आप कह सकते हो हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड एंड ऑल दोज। ठीक है, सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो यू कैन गो एंड वॉच इट। सो दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट वर्ड विच इज़ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। नाउ डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे कि आप कोई कैमरा यूज़ कर रहे हैं या कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसका बेसिक फीचर्स पता है, कौन सा बटन दबाने पे आपको क्या आउटपुट मिलेगा आपको वो पता है, लेकिन यू डू नॉट नो दैट व्हाट आर द थिंग्स यूज्ड, क्या क्या वहाँ पे उसके पीछे क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं, या फिर एक फ़ोन को बनाने के लिए किस टाइप्स का जो है मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है, उसमें क्या जो सिम कार्ड होता है वगैरह वगैरह उसमें क्या कोड फीड किया जाता है कि उसमें सब कुछ सारा डाटा स्टोर रहता है। तो आपको नहीं पता कि उसके पीछे का स्टोरी क्या है, फ़ोन कैसे बना, क्या उसमें कोड दिया गया, किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर बना, उसके पीछे क्या क्या कोड है, दैट यू डू नॉट नो। यू नो दैट इफ़ आई विल यूज़ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, हाउ कैन आई यूज़ दिस सॉफ्टवेयर एंड व्हाट विल हैपन इफ़ आई यूज़ दिस सॉफ्टवेयर, राइट। तो उसी को बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इट इज़ बेसिकली एन एक्ट where you are getting only the essential features without knowing the background details. It always relative to the purpose or the user, यानी कि जो आपका पर्पस है जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर में आए हो सिर्फ वही चीज़ आपको दिखाया जाएगा, बाकी चीज़ नहीं दिखाया जाएगा। और ये जो एब्स्ट्रैक्शन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली व्हाट यू नीड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अब दूसरा जो टर्म है वो है इनहेरिटेंस। नाउ इनहेरिटेंस एक टर्म है बायोलॉजी में, मेनली इन क्लास 10th ICSE, विच इज़ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी या फिर जो इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है कि कोई भी इंसान अपने पेरेंट्स से कुछ क्वालिटी इनहेरिट करता है, लेता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इनहेरिटेंस या हेरिडिटी इन बायोलॉजी, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कोई क्लास बनाए और उसके अंदर न्यू क्लासेस बनाए तो वो जो न्यू क्लास होगा वो अपने प्रीवियस क्लास से डाटा को ले सकता है, वो उससे रिलेटेड ही होगा। जैसे कि हम एक ही क्लास बनाएंगे लेकिन उसके अंदर जो अलग अलग कुछ एक दो और क्लासेस बनाएंगे और वो जो एक दो और क्लासेस है वो उस मेन क्लास से डायरेक्टली रिलेटेड होगा। सपोज अगर हम एक मेन क्लास बनाए विच इज़ क्लास फ्लावर, ठीक है, और उसके अंदर हम दो और सब डिविजन्स ऑफ क्लासेस बनाए, न्यू क्लासेस बनाए। सपोज वन इज़ क्लास सनफ्लावर एंड क्लास रोज़। सो अगर हम फ्लावर्स के कुछ फीचर्स लिखते हैं जैसे कि पॉलिनेशन, या फिर सपोज़ कि हम लोग लिखें कि वो उसके अंदर 3 पार्ट्स होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, या फिर जो भी है बेसिक हम बना दिए कि स्टेम होता है और कॉरला होता है, इफ़ यू रीड बायोलॉजी यू मस्ट बी नोइंग। तो जो भी है हम कोई बेसिक कैरेक्टर्स दे दिए फ्लावर्स का क्लास फ्लावर में, और उसके अंदर जो दूसरा क्लास सनफ्लावर और क्लास रोज़ बनाएंगे उसका सर्टेन खुद का प्रॉपर्टीज़ होगा कि सनफ्लावर सपोज हम लोग लिखते हैं मेनली येलो, सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं कि मेनली प्रेजेंट इन हिली रीजन, ठीक है, और रोज़ का हम लोग लिख सकते हैं रेड, मेनली रेड एंड थॉर्न्स, ठीक है। तो ये हम लोग उसका सब डिवीज़न का जो क्लासेस था, नहीं क्लासेस का जो सब डिवीज़न था, क्लास फ्लावर का जो सब डिवीज़न था सनफ्लावर या रोज़ में। अब जो सनफ्लावर या रोज़ है ये फ्लावर का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स तो इनहेरिट करेगा ही, लेकिन इसका खुद का भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन जो प्रॉपर्टी ये पिछले क्लास से इनहेरिट करेगा, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो यू कैन सी द डेफिनेशन हियर। द टर्म इनहेरिटेंस मीन्स टू लिंक एंड शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास विद द अदर क्लास। मीन्स इफ वन क्लास इज यूजिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर क्लास दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। दिस कैन बी डन बाय एक्सटेंडिंग अ क्लास इनटू अनदर क्लास एंड यूजिंग बोथ इट। तो अभी हम लोग जब मेथड क्लास बनाने सीखेंगे या फिर जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाने सीखेंगे इन जावा, देन वी विल लर्न अबाउट दैट व्हाट इज़ इट प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस हम लोग को प्रैक्टिकली भी काम देगा। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली मीन्स दैट we can use one term for different meanings. Like if you are a fan of cricket you must be knowing that जो duck word है वो cricket में भी use होता है and it is also a water bird. So duck is also a person who got out without any score, and duck is also a bird, water bird. So we can use a same word for 2 different meanings. Okay, so
like this property. सो लाइक उसी तरीके से जब हम लोग वॉल्यूम लिख रहे हैं तो वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम वी डू नॉट मीन व्हाट, right? We can also say that volume of a cube, we can also say volume of a cuboid, and we can also say volume of a circle, and all the three have different formulas. So when we make these kind of function, then according to the instruction given inside the brackets, like if volume single side is given, then the computer can understand that okay, single side is given and we have to find the volume, so it's basically side cube, which is the formula of volume for cube. Then volume, which is length into breadth into height for cuboid. Volume like pi r square, which is for circle. So basically here we are giving the radius because we know the value of pi and the other things already. So the term polymorphism is defined as a process of using a function method for more than one purpose. So here we are not using this particular method or function name for one purpose, but we are using it for different purposes. We can find the volume of different objects by a single method or a single function. So these kind of thing, when we are using a same word for 2-3 different meanings or even more than that, we say that process as polymorphism. Then comes encapsulation. Encapsulation basically means that if I am creating different data function, means I am creating different suppose functions and datas and all those things using objects in different places, like in different classes you can say, and then I am encapsulating all those data and function in a single class. That process of encapsulating different data function and objects under a certain class is known as encapsulation. So another feature of object oriented programming which restricts the free flow of data from one object to other. So we cannot free flow from one, like we cannot just say that a object is directly related to the other object. The data functions are wrapped together in an object such that the data can only be accessed in associated functions. So basically we can say that a system of wrapping data and functions into a single unit is known as encapsulation. So when we are wrapping data or function in a single unit, that process is known as encapsulation. And we know that these 5 terms which we read just now is a part of object oriented programming, which is basically a programming which is based or works upon objects. Like anything we write in Java is basically can be considered as an object or a keyword, right? So the object which we make in a Java, so that's what a Java programming is totally based on the objects we create, whether it is a name of a variable or it is a name of a function, right? So that is object oriented programming. And that there is also like procedure oriented programming, which is mainly based on flowcharts and how easily a data flows, and the structure oriented programming, which is a modular approach to improve the clarity and the quality and development time of the programming steps. So how easily we can do that is structure oriented programming, but the most accepted and what we know that Java, Python is all object oriented programming. So in today's video we basically learned about the first chapter and the 5 important words related to object oriented programming. If you like the video, then hit the like button, subscribe to my channel and share it to your friends. Thank you.